मुख्तसर कोर्स में क्या इंटरेस्ट था और क्या क्या आप हासिल करना चाहते थे या क्या सीख रहे हैं या इस तरह की कोई बात? जी जी, मेरा जो ज़ाती जो इसमें इंटरेस्ट था वो शुरू हुआ था फ़ारसी ज़ुबान सीखने से, और उससे मुताल्लिक कुछ मज़मून जो हैं वो सीखने के मुताल्लिक आजकल कुछ तसव्वुफ़ के बारे में ज़्यादा कुछ इंसाइट चाहिए, जो कि इस क्लास में मेरे ख्याल में काफ़ी एक उसका ख़ास पहलू है। तो बस उसी लिहाज से अब कुछ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो वही बस अब सीखना है इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम. So I am based in Greensboro right now, but I'm attending Tulane University in New Orleans and I'm doing my PhD. मेरा जो खास इंटरेस्ट है और वो मेरी रिसर्च का भी इंटरेस्ट है वो है women's voices in early Islamic intellectual history. और अभी मैं जो हूँ इस कोर्स में आई एम ट्राइंग टू डू सम रिसर्च अराउंड कि कौन सी इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस रही थी, क्योंकि कोर्स का काफी हद तक ताल्लुक हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर था, खासकर मुगल हिस्ट्री के दौर में। तो उसमें कौन कौन सी औरतों के रोल्स रहे और क्या क्या उनकी इन्फ्लुएंसेस रहे, बिकॉज आई फील कि लाइक हम उस तरह से हमने उस तरह से हिस्ट्री पढ़ी है इस्लामिक फ्रॉम वुमेन और जेंडर पर्सपेक्टिव, और ना ही हमें इतने ज्यादा और इस तरह से आइदर इन आवर स्कूल करिकुलम और उस तरह से। और इस कोर्स में भी मेरा यही इंटरेस्ट था कि उन वॉइसेस को मैं अपनी रिसर्च के अंदर एक्सप्लोर कर सकूं और उनसे कुछ लर्न कर सके हम सब लोग भी, जब उस रिसर्च की डिसेमिनेशन होती है। नहीं, मेरी रिसर्च है जेंडर एंड वुमेन्स लीडरशिप इन ग्लोबल हेल्थ. सो बेसिकली आई एम डूइंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव जेंडर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. This is Bushra. I'm in Lahore. I am assistant professor at an institute here in Lahore. And regarding the course, Hast और Neest में काफी अरसा हो गया, बहुत सी sittings में को join किए हुए, तो wisdom बांट रहे थे, so I thought कि why not become part of it and learn something other than जितना भी हमें पढ़ाया जाता है आर्ट और डिजाइन और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सारी चीजें. So I find the readings quite dense, including the one you sent. So देखें ऐसा कोशिश हो रही है कुछ समझने की, कुछ सीखने की. So how it goes. आप किस चीज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? I'm a textile designer, so I teach textiles. It's PIFT है इंस्टीट्यूट यहाँ लाहौर में इधर. क्वेटा, और साइकोलॉजी में पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, और ये कोर्स ज्वाइन किया इससे पहले भी हस्तोनीस के साथ अटैच रही हूँ. आंसर्स नहीं है सर्टेन क्वेश्चंस के जो कि एग्जिस्टिंग फिलोसफीज अभी तक जो पढ़ी हैं सुनी है, लिटरेचर फिलोसफी वो नहीं दे पाती, तो बस वो एक प्रोसेस चल रहा है, इसी सिलसिले में ज्वाइन किया ये कोर्स. जी अस्सलाम वालेकुम. Just a few words only. I've been connected with the leadership program of the youth, quite close to them, have been and still am. I've got a trust, 𝗗𝗲𝘀 Memorial Trust, where we get patients in the emergency around 200-250. So I'm trying to balance the domestic, the social, and all this. And it's definitely a part of the self-growth and self-discovery. And I thought that the search of wisdom, 𝗵𝗏𝘀 and the team are just absolutely out of this world. इन्होंने इतनी मेहनत throughout की है और इतना कुछ हमें सिखाया है. And it's a constant self-discovery and growth with their help. So that's all, just a very simple life. Nothing, no big studies yet. But मेरा दिल बहुत चाहता है कि कुछ और भी पढ़ लिया जाए, but बहुत कुछ सिखा रहे हैं. We are all very grateful to 𝗵𝗏𝘀 and the team and all the teachers that come here. Thank you. मेरा नाम सारा है, as you know. मैं यहाँ पे I live in Fargo and I'm an assistant professor in North Dakota State University. मेरा department है educational administration और मेरी PhD होती थी higher education administration में. And my research is specifically about international and comparative higher education. I look at international policies, mostly, and international mobilities and all that stuff.
इस कोर्स में मैं कैसे आ गई, because I have some background in art. मेरी undergrad degree art में थी, and art history. I really liked literature as well, तो वो भी मैं पढ़ती रहती थी a lot. And then I studied some philosophy during education, क्योंकि education के courses के दौरान you need to study philosophy, and research के लिए philosophy is the fundamental thing. You need to ground yourself in some philosophical school of thought. So it started from very Western. Of course, मेरी training बहुत westernized है. But I wasn't very aware of Muslim philosophy, and मैंने यहाँ पे देखा, especially the way the courses are laid. They totally skip a century when they teach philosophy here. So they say dark ages, but they completely miss, and they never want to talk about कि कोई और उस वक्त कुछ कर रहा था, and it's all about Western philosophy. So I felt it's very it's an injustice, and it's bad, and I need to speak and I need to learn. So मैं अपने courses में I really include a very international and comparative perspectives, and I don't teach only Western philosophy. I teach philosophy of education. So that's why this course was very helpful for me to see this perspective कि Muslim philosophy क्या है, or what is happening here. So I had some familiarity, but this really helped me to understand it a little bit better. मेरा नाम उमैर है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ. I have done my fellowship in pathology और मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ. हस्तनीस से फारसी की लैंग्वेज की क्लासेस के सिलसिले में अटैच हुए थे, जो सिलसिला अभी तक जारी है. थोड़ा बहुत खुद पढ़ने लिखने लिखाने का शौक है, उस वजह से कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं थी पहले से जो इस कोर्स का हिस्सा हैं. तो इस कोर्स में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन्हीं चीज़ों को गो थ्रू करने का मौका मिला, इसलिए ये कोर्स ज्वाइन किया. मेरा नाम वकार है और मैं कुछ अरसे से हस्तनीस आने का इत्तेफाक हो रहा है, और इनकी महफिलों में, और ख़ास तौर पे जो रमज़ान की हैं और जो मुहर्रम वाले दिनों में होती हैं, तो काफ़ी एक स्पिरिचुअल सा एक्सपीरियंस होता है. फिर इन्होंने ये जब कोर्स शुरू किया तो अंदाज़ा यही था, ख्वाहिश यही थी कि ये जो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़िकल जितने भी स्कूल्स हैं और उनके बारे में थोड़ा सा तालीम ली जाए और समझा जाए. वैसे पेशे के एतबार से मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक. मैंने कहा कि अब इंशाल्लाह इकट्ठे अब 6 सेशंस में होंगे, तो एक guys to know something about each other. और अच्छा, अब इसमें so welcome everyone. हम ज़्यादातर मैं कोर्स में इंग्लिश में बात करूंगा, लेकिन कोई सवालात हों, डिस्कशंस वगैरह, उसमें उर्दू, we can switch to Urdu, or we can mix it up as well. तो जैसे अब ये मॉडर्निटी का जो टॉपिक है, मतलब इसको कई तरीकों से शुरू किया जा सकता है. The topic of modernity, and what is modernity, what is modernization, what is the modern. तो एक मैं जनरल सवाल करूंगा पहले आप सबसे, सब यहाँ सबको ज़ाहिर जवाब देने की जरूरत, जिसका भी इसमें जो भी देना चाहे, कि आपके ख्याल में मॉडर्न क्या है. इसलिए ये it's a subject that can be approached from many different angles, and theorists, scholars in different disciplines, as well as popular discourse about this topic, in popular discourse about this topic, it's described from many different vantage points. So it's just, when we talk about modernity or modernization, it's important to remember that it's a contested term. It has, many ways you can approach it, and the scholars will be looking at, which will be diverse, are approaching it in various ways. And there's some ways we don't want to approach modernity because they're not very
I would argue there's superficial ways of looking at what modernity is. So we want to kind of be more serious about investigating what is modernity. So just मतलब general अगर आप article पे based नहीं आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर generally अगर आपसे पूछा जाए कि what is modernity, क्या है, क्या चीज है ये, क्या जवाब होगा? Let's get at least a couple of people. मेरे नजदीक मॉडर्निटी जो है वो रिसेंट टाइम्स में मेरे ख्याल में जो हमारी रिलीजन और साइंस से जो डाइवर्जेंस हुई है वहां से रिसेंट टाइम्स में आप उसको देख सकते हैं कि रिलायंस ऑन द प्रोग्रेस इज टाइड टू साइंस एज अपोज टू जो रिलीजन जिस तरह से करता था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर ऑटोमेशन और जो भी है टेक्नोलॉजिकल उस पर रिलायंस बहुत हो गई है. सो दैट इज इन रिसेंट टाइम. हमारे मेरे ख्याल में टॉपिक के हवाले से जो मेरे जहन में जो मेजर चीज आती है वो ये है कि जो हमारा जो नॉलेज का जो सोर्स है वो मॉडर्न टाइम्स में इज बेस्ड ऑन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, और उस पर जो रिलायंस है, जो हमें जो कहते हैं जो सेंसेस हैं, जो वेरीफाइबल सेंसेस, एम्पिरिकल एविडेंस उससे डिराइव होती है, एज अपोज टू जो हमें इंट्रिंसिक हमारे में वदियत की गई है जो अल्लाह ताला की, तो जो प्राइमोडियल जिसे कहते हैं कि जो थे सोर्सेस, सो वो हमारे जहन से आहिस्ता आहिस्ता महव हो गई है ड्यू टू द एम्फसिस ऑन इन मॉडर्न टाइम्स. तो अब वो हमारे जहन से निकल के अब एक फोकस इज टोटली डिफरेंट, और वो चीज एक किस्सा पारीना बन गई और एक वो ओल्ड वाइफ्स टेल है बेसिकली. मेरे नजदीक एक ये छोटी सी डेफिनेशन है. That's very good. और आपकी definition काफी जो हमारे आज director हैं Dr. Sidhu, we would agree with much of what you said, but we'll come back to that. तो आप basically science or technology की आपने बात की as major determiners of modernity and basic and the scientific method, yeah, empirical sensory knowledge being again another key indicator of where modernity begins, or how to talk about modernity, how it's different from what is not modernity, what came before. Say, yes. What other people? Or, I think talking about modernity, one thing that comes to my mind is art. And art के अंदर जो movements थी, the lots of movements in art were very sensory, very individualistic, very sensory, breaking the law, just thinking the world from, I think maybe a grounding in humanism as well. So thinking from humanist perspective, it's how the man or human sees the world and how it is presented. It was also, I think, would consider a tenet of modern art or modernity in general in life, the world view in that sense as well. Excellent. Yeah, so complementing science from another angle. Yeah, so as talking about the issue of humanism, how it makes the human kind of the center of things. And we'll come back to all of these. I just right now want to. I just want to add that I think modernity की definition बहुत self-defined है, because I feel if we look at from a chronological perspective, we often look back at history and see that it's it's old times and the current times we perceive as being modern. But जैसे जैसे इस course को हम पढ़ रहे थे, I was reflecting that हमारी जो 10th to 13th century Islamic intellectual history की development थी, that was very modern. अगर हम उसको आज से भी compare करें, we are not involved in those kind of intellectual developments architecturally, या intellectually वैसे भी, historically and philosophically भी. So I feel कि like अगर हम उसको time span पे measure करें, तो it's not always that the past is less modern or antiquated, or the current times are modern. And
And I feel कि modernity की definition भी West ने हमें दी है starting from the Renaissance period. But अगर हम इसको अपनी Islamic history के perspective से देखें तो हमारी Renaissance उनसे 400-500 years से पहले आ चुकी थी. And we need to look back at those times. So I'm really confused at what we perceive as modern, because I feel it's so self-defined and relative. So yeah, this brings us to the question. Yeah, modern is defined in many different ways. So even first of all, call modern as a time period, right? So whether it's a period of history, or a particular period, or it's just in the way that you're using it, which is modern just means whatever's contemporary, or perhaps it has certain kinds of qualities that define some period as modern. As you see, I'll shy away from that definition a little bit, but we'll, because that just, in the sense that there could be some kind of term that can be used that for what is innovative or new or changing, but using modern for that, perhaps, we could talk about it, is leads to a lack of enough distinction between something that are very specific to what we normally call the modern period, historical period, the last few hundred years, and what came before it. Although, of course, there's things that are continuous. So if you look at, for example, if like you mentioned, science and so forth, I would say you're right. I mean, there were other times when there were periods of flourishing of science, or of new forms of technology, of innovation, and things that distinctly are known as modern, that we define or oftentimes associate with modernity. But are they? Is there something different about modern science, or is there something different about some of the kinds of technology that's being developed here? Is there a different worldview or a different approach involved? And I think it's an open question. There's people who have different views on it. So that's definitely adds to the discussion. Other people. जी, मेरे ख्याल में एक सेक्युलर लिबरल साइंटिफिक अप्रोच जो है मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी की, जैसे भी बात ये की गई थी कि हर तरह की ऐसी एक्सप्लेनेशन लाइफ से रिलेटेड जो कि आपकी सेंसेस तक, सेंस एक्सपीरियंस तक महदूद है या सेंस एक्सपीरियंस से आती है. मेरा ख्याल है कि ये किसी भी आर्ट के रेल्म में आप चले जाएं, फिलॉसफी के रेल्म में चले जाएं, हम साइकोलॉजी की जब बात करते हैं उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की, ड्रीम्स की, किसी भी चीज़ की जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो हम मटीरियलिस्टिक सेंस में ही दे रहे होते हैं. तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि मॉडर्निटी को आज हम जिस तरह से, आज के पर्सपेक्टिव में मॉडर्निटी को जिस तरह से हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज हाउ आई कॉन्सेप्चुअलाइज मॉडर्निटी, मटीरियलिस्टिक फिलोसफी की हवाले से जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की. Alright, that's good. तो आपने ये कुछ इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, that oftentimes associated with modernity, secular, for example, उस पर भी हमें कुछ डिस्कशन करनी चाहिए. Secular can be another kind of those words that have many definitions in the way that they're used in a popular fashion. But liberal, I think, maybe liberal is a more complicated word. In some ways, from a traditional point of view, it might seem like it's liberalism, but maybe we can bring that up as well. Materialism, of course, it ties with the pehli jo baat Zubair Sahab ne ki thi. At least it usi taraf ye baat jati hai कि और मेरे ख्याल है और भी of a kind of knowledge जो कि sensory या physical दुनिया से connected हो, giving that not only being given primacy, magar more than that, it being the defining way
way of knowledge, or that and we'll talk about that today as well. So yeah, that's all very helpful. So we're kind of collecting different चीजें, बल्कि मैं इस पे लिख देता हूँ यहाँ पे, just these are things we'll come back and talk about. The modernity से related, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ on the basically just words जो आए हैं हमारे पास, ताकि we can come back to it. जो रवाज हो, ट्रेडिशन हो, राइज हो, उससे हट जाए, और उसमें ऑफ कोर्स अपने पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं. इन्वेस्टिगेटिव डेफिनेटली मोर देन बिफोर देन द ट्रेडिशन इटसेल्फ. ट्रेडिशन थोड़ा सा जरा स्टेल हो जाता है, एक जगह आके रुक जाता है, और सिर्फ मॉडर्न एक ईरा जब शुरू होता है, जो भी जिस चीज को भी आप मॉडर्न कह लें, उसमें इन्वेस्टिगेटिव भी है, ट्रेडिशन से हट के भी है. ट्रेडिशन को जब रोक दिया जाता है तो उसकी बहुत सी अच्छी वैल्यूज और बातें टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल में वक्त ईरा जो स्पेस आउट भी हो जाता है. बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म इसका बाइंडिंग नहीं रहता बिकॉज ऑफ वैल्यूज, लैक ऑफ दैट. तो रिवाज से हट के, और बहुत सी चीजें, टेक्नोलॉजी है, साइंसेस जो है, सर्टनली इसके अपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव होने की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, जो शायद ट्रेडिशन में ना होती. ट्रेडिशन में हम सवाल करते हुए, डिस्कवर करते हुए डरते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो ऐसा रिचुअल है, उससे अगर हट गए तो शायद हम पे कोई फतवे से लग जाएंगे, भले अंग्रेज हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, वो थोड़ा सा डर जाता है. जैसे कि आपने देखा गैलीलियो वगैरह सबके साथ बहुत कुछ हुआ, जोन ऑफ आर्क के साथ बहुत कुछ हुआ. सो कई दफा जब ट्रेडिशन से हट के की जाती है चीज, तो उसमें फिर ये नहीं रहता कि ये अच्छी ट्रेडिशन है, इसको फॉलो करना है, या ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको फॉलो करने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की न करते. और मटेरियलिज्म जो है, खैर आई पर्सनली आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट दैट, बिकॉज कैपिटलिज्म के अपने फायदे जरूर होंगे, लेकिन डाउन साइड बहुत ज्यादा है. So when you talk about the definition of modernity, मैंने उसके बारे में पढ़ा तो कुछ नहीं, but what I've gathered from all these lectures here, it is the leaving of the tradition and stepping into the zone of more investigation and trying to progress and finding and discovering more. Certainly traditionalists भी बहुत modern थे, वो अपने जमाने के हिसाब से, इसलिए वो मॉडर्न जमाना एक एक कदम और आगे आता गया. सो मॉडर्निटी की कुछ चीजें तो मैं बहुत उसके पर्सनली, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट ओल्ड टाइम्स वेयर वैल्यूज वर कंसिडर्ड मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. और अगर वैल्यूज और ये सारी चीजें कहीं कहीं हम फॉलो करते तो ठीक है, साइंस में और टेक्नोलॉजी में और एक हद तक मटेरियलिज्म में जरूर प्रोग्रेस करते, लेकिन कुछ ट्रेडिशन की चीजें ना छोड़ते तो शायद मिक्स हम थोड़ा सा करने से आज, जिसको हम इसलिए लोग क्या जब मॉडर्न का लफ्ज करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका, इसीलिए हो जाता है. जी, थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट, आपने एक तो मेरा ख्याल है एक इम्पोर्टेंट टर्म जो इस्तेमाल किया, तरक्की या प्रोग्रेस, वो भी एक टर्म है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या होती है, या प्रोग्रेस को किस तरह डिफाइन किया जाता है. यूनिवर्सल टर्म है या ये एक लोडेड, जैसे लोडेड टर्म कह सकते हैं कि, और नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल है जो आपकी रीडिंग्स होंगी उसमें ये थोड़े से प्रोग्रेस को डिस्कस किया गया. दूसरी बात, आप मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो जरा बहुत ही ब्रॉड टर्म है. मैं बिल्कुल समझता हूँ जो आप कह रही, मगर उसको आई डोंट नो इफ आई शुड पुट दैट अप एज, मगर हाउ शुड आई पुट दैट. इसलिए वन कुड आर्ग्यू दैट कि इन्वेस्टिगेट तो हमेशा ही लोग करते रहते हैं, मतलब इन द सेंस कि इट्स अ ब्रॉड इनफ थिंग दैट किसी भी सोसाइटी में लोगों ने produced massive amounts of literature on all sorts of subjects, which can be called investigative. But I think maybe आप शायद rational मतलब using particular rational या scientific methods या I think that's the आप उस तरफ जा रही है, but I don't know.
Well, rational and of course scientific, investigative, definitely is a broad term, but as a positive step towards finding which even the traditionalists and older, all these studies, they were based on investigation of some sort, whatever. So it's a very positive thing, certainly. What I meant definitely is not only scientific and also making progress, which is a step forward in whatever subject or whatever field it is, not standing there and making it stale. In that respect, I meant investigative and all that. However, investigation to pehle bhi agar na karte, to itni kitabein, our Muslims have written books, Christians have written books. Look at the Greeks, their philosophies, they were questioned and they were progressed. And if you talk about even Confucius, I mean, they were all things which were introspective, investigative, and progressive. Modern, इस वक्त मेरे ख्याल में 2-3 चीजों की वजह से जरा सा मेरे लिए एक नेगेटिव लफ्ज इसलिए बन गया कि traditional values of culture, for example, of some rituals which give you discipline. That's why modern thoda sa, only in this particular aspect, not otherwise. Modernity के साथ ये जो दो बातें आपने जो और भी लोगों आप में से many, I think a couple of people touched on that कि loss of tradition या modernity को tradition के खिलाफ define किया जाता है at least, but that's one possibility. It doesn't have to be the only way of looking at modernity, but modernity as contrasted to tradition, and therefore modernity as a loss of tradition या loss of जैसे आप कह रही थी to values or traditional values. अगर हम वो मॉडर्निटी को पिछले 400 साल का जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, मॉडर्न वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसको अगर हम जो एक प्रोग्रेशन का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर हम एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे किस तरह चेंजेस आई हैं, तो वो देखा गया बतदरीज वो चेंजेस ऐसी हैं कि जिसे आप कहते हैं कि इट्स अ डिनायल ऑफ एनीथिंग एब्सोल्यूट और इम्यूटेबल, और मतलब कि प्रोग्रेसिवली अगर आप देखें, और वो जो डिनायल है उसकी इंटेंसिटी में भी, जिसे कहते हैं उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई है वक्त के साथ, वो एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देख लें या ओंटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें। और इसकी जो लिमिट है मॉडर्निटी की, मतलब वेयर इट इज हेडिंग, इट्स एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म, वेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनीथिंग एब्सोल्यूट, एनीथिंग एटर्नल और इम्यूटेबल। मतलब आगे जितनी प्रोग्रेसिवली थ्योरीज पेश हो रही हैं, जो आगे भी शायद होंगी, उनका मकसद यही होगा कि कोई ट्रेस ना रहे किसी भी किस्म की एब्सोल्यूट रियलिटी का। उसमें यह भी है कि हम बहसते इंसान किसी ऐसी चीज को, ऐसी चीज के बारे में इल्म भी हासिल नहीं कर सकते जो कि एब्सोल्यूट या इम्यूटेबल है, और फिर उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी का जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट डिनायल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये भी इसकी लिमिट होगी मॉडर्निटी की। एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म की तरफ बेसिकली हम जा रहे हैं। तो मेरी नजर में टेंडेंसी यही है मॉडर्निटी की, मतलब मॉडर्न वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, रेनेसांस के बाद देखा जाए, तो इट्स एब्सोल्यूट, इट्स डिनायल ऑफ एनीथिंग एब्सोल्यूट, एनीथिंग इम्यूटेबल, एनीथिंग एटर्नल, और इट इज हेडिंग टुवर्ड्स एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म। तो मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं। That's very helpful. मतलब ये भी एक और एंगल है जिसके, so I'm just going to put relativism, इसलिए कि lack of absolute जो है वो यही है, मतलब यहाँ से शुरू होता है, और एक जनरली इसमें सारे पोस्ट मॉडर्निटी भी आ जाती है, but a movement towards relativism, वो शायद आज वहां तक बात पहुंच जाए जब डिस्कशन में डॉक्टर नासिर की किताब जब करेंगे, मगर it's yeah, so that's another good other at least nuancing of the conversation by introducing this topic. So all right, that's so alhamdulillah, this is a very thorough, quite complex, all the things that all of you have brought forward. These are all things that we'll touch upon, and are important in understanding an issue which is one could argue is the key issue of our time,
which many people refer to as the modern period or modern age, or so over the course of the next few classes, we'll look at various different perspectives on modernity, right? So one of the things that is going to be common is that you might, when we look at the Islamic world, we might read a little bit of Muslim modernists or what their responses were, but a lot of the other people we'll be looking at is are not particularly keen on modernity, or rather, they are, because they're critics in some way from different angles of aspects of modernity, right? So today, and the reason one might argue, why are we not talking about what are the positive things about modernity? I think that's because those are obvious, where they're talked about in our media, in our books, in our kind of official histories, whether they're national histories or they're general cultural histories. Modernity is something that people celebrate. It's something which is taken for granted, associated with, for example, this word progress, right? It's something which has brought us lots of benefits, and one could definitely, that I won't argue with that, that there have been many benefits, but at what cost is one of the questions that one can ask. And I think some of the theorists, and they're different. So the Sayyid Hussain Nasr, he's a philosophy, is actually just for disclosure's sake. He's my own teacher. He's been my mentor for many years. But many of the other people that we're looking at, Martin Lings, who has in many ways similar perspective. But then also looking at people like Neil Postman, who's an American writer on the media, on modern popular culture. We'll be looking at various people who are talking about the distinction or the conflict between science and religion, and whether that is a real distinction or not. We'll be also looking at, for the last couple of classes, first 4 classes, I think, will be general different views of what is modernity, or what are different aspects of modernity. And it won't be exhaustive. By even looking at all of what all of you said, I know, for example, if you had more time, it would be nice to have something. I don't have something planned on humanism. It's something we'll talk about, but it's a very important part of modernity, but it'll be something in the background. And I think we'll definitely talk about it, but it's not like one session on humanism or individualism. Maybe we'll at least have a little bit on. But the last 2 sessions will look at particularly at the Islamic world. So Islami dunya mein modernity kaise aayi? So for that, uske liye colonialism is a huge category, or east or west ki baatein, ya at least west versus the rest, jis tarah bhi isko aap conceptualize kare. So we'll look at that, and also at particular figures within the subcontinent, particularly that responded to modernity, or rather the broader question. So if modernism or modernity involves things such as science, or rationality, a move towards a more materialism, not necessarily in a crude sense of just capitalist materialism, but a focus on the material as opposed to the immaterial that goes beyond matter, or secularism and so forth. When these things came to the Islamic world, how did they come, and how did Muslims respond? And we look at everything from Muslim modernists to critics of modernity, of traditional and traditionalists, but ulama, for example, Maulana Ashraf Ali Thanvi being an important figure in the subcontinent, who I've written on, and he's among the ulama, one of the most kind of interesting from a philosophical point of view of someone who uses Islamic thought to critique certain aspects of Western modernity. So that's the kind of just a broad overview.
of some of the things we'll be looking at in over the next few weeks. So let's. So what? Let's, before we get to. So we have a couple of Dhamma Sahib has mentioned we can take a break in 5 minutes. So until that time, I'll just at least introduce, and then in the session when we come back, we'll talk about your text and Dr. Nasser's particular approach to modernity, which is from one can say epistemological angle. Of course, it's ontological as well, but it's talking particularly about knowledge and how do we come to acquire knowledge, and modernity is shifting modernity is shifting what knowledge means and how it's acquired, and focusing on knowing in a particular way than pre-modern thinkers had done. He even doesn't even like the word thinker, but it's, you can use it for general purposes. So, but before that, just to make a kind of contrast, a broader approach, one could say that Dr. Nasser's perspective on modernity is beginning with a kind of intellectual or philosophical approach to what modernity is. And that's something we'll be doing a little bit more of, because I view this, as more of an intellectual enterprise. One could speak of modernity purely from an economic angle. I'm not qualified to do that, but somebody who is one could just look at it, and there's people who do that. That modernity is mostly about capitalism and economic changes and so on. I think that that is something which can definitely there's important aspects of modernity that can be seen from economic perspective. What I would argue is that would be really a very truncated or only partial understanding of what modernity involves. But you'll find many writers who see modernity as mainly or as largely a change in economy, for example. There might be other people who see modernity as a political, as involving a kind of change of politics, going from a more tradition-based, hierarchy-based understanding to modern ideas of democracy, freedom, human rights, and so on. So that being central to a particular conception of modernity. Other writers might have also written on modernity as a social process, right? That this also sometimes overlaps with the political, in the sense that, for example, going from a hierarchy-based traditional order to a form of social organization that is focused much more on the individual and on democratic deliberation on and as well as many, there's other aspects. There's different ways that a social approach to modernity can be taken. Another approach can be seen as a cultural approach that I think overlaps sometimes with the intellectual approach, in which modernity is about a change of culture, that you move from a religious worldview in which cultural norms and ethical norms are determined by religion to one in which a secular understanding of the world is becomes central. And then sometimes, for example, Max Weber's perspective of disenchantment of the world is very much along these lines. So I'm just going to put this, so there's a writer, if you wanted to look more into this, he's a major sociologist who writes on this, Stuart Hall. He says there's basically four
angles from which one can approach modernity, and he defines these as economic, political, social, and cultural. So just situating the readings for today, he would probably say it comes under cultural. I would argue that maybe cultural is not, it's too broad a term, and that perhaps one should add to this list an intellectual or philosophical approach to what modernity is. That's what Dr. Hast is particularly engaged in doing. So I think maybe 5 minutes हो गया ना? That's right. So हो गए, हम 10 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं. That's right. ठीक है. غیر داغ دل نمی باشد در این غربت سرا خورشید تنها گرد را ماند در این غربت سرا خورشید تنها گرد را ماند